Now the next is adverb clause. A clause that acts as an adverb in a sentence is called an adverb clause. So kind of adverb clauses. कितनी तरह की adverb clauses होती हैं? Time, place, reason, manner, comparison. So the adverb clause of time, which gives us the answer when. Adverb clause of place that tells us where. Adverb clause of reason that tells us the why, answers the why, and manner how, and comparison that compares. When I returned home, I found my dog missing. An adverb clause of time shows the time of action. हमारा जो adverb clause of time होगा वो हमें action का time बताएगा. For example, the match was stopped. मैच बंद हो गया when it started to rain. जब बारिश आनी शुरू हो गई. When the match stopped when it started rain. It is usually introduced by when, while, as, wherever, after, before और since. और ये सब क्या है, कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं सेंटेंस में, कैसे यूज होते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंदर, व्हेन, व्हाइल, एज, वेयरएवर, आफ्टर, बिफोर और सिंस. नेक्स्ट इज एन एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस शोज द प्लेस ऑफ एक्शन. एक्शन का प्लेस हमें बताता है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस. एग्जाम्पल, आई लुक्ड फॉर यू वेयर एवर आई कुड. मैंने तुम्हें देखा. कहाँ देखा? वेयर एवर आई कुड, जहाँ जहाँ मैं देख सकता था. इट स्टार्ट्स विद वेयर और वेयर एवर. ये किससे स्टार्ट होता है? प्लेस कहाँ, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस कहाँ से स्टार्ट होगा? इट स्टार्ट्स विद वेयर और वेयर एवर. ये वेयर और वेयर एवर से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर शोज द मैनर ऑफ एक्शन. एक्शन का मैनर बताता है ये हमें. एग्जाम्पल, इट सीम्ड एज इफ ही वॉज लॉस्ट. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गुम गया है. इट यूजली स्टार्ट्स विद एज इफ, एज दाउ और इन द वे. ओके. नेक्स्ट इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन शोज द रीजन बिहाइंड द एक्शन. एक्शन के पीछे क्या रीजन है उसके बारे में हमें ये बताता है. एग्जाम्पल, शी वेंट टू द ऑफिस. वो ऑफिस गई बिकॉज हर बॉस वॉन्टेड टू मीट हर. क्योंकि उसका बॉस उससे मिलना चाहता था. दिस बिगिन्स विद बिकॉज सिंस एज और दैट. सो द एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन्स बिगिन्स विद द बिकॉज सिंस एज एंड दैट. नाउ नेक्स्ट इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन इंडिकेट्स अ कंपैरिजन ऑफ क्वालिटीज. Adverb clause of comparison we use to compare two things. For example, it is cooler than it was yesterday. So we are comparing today and yesterday. Okay. So this usually begins with than, no less than. So adverb clause of comparison begins with than or less than. So all these points you need to keep in your mind that which clause begins with what. Okay. Now the next is relative clause. A relative clause tells us which person or thing is referred to by the speaker. It can also indicate what kind of person or thing the speaker means. Words like who, which, that are used to introduce it. It is often an adjective clause which describes a noun or pronoun. Relative clause we have already discussed in the adjective clause. Okay. See, use of who. We use who in the relative clause when we discuss about the people and not anything. Who we use for the people only. The girl who scored the highest marks in the English is my cousin. जिस लड़की ने इंग्लिश में highest marks लिए हैं वो मेरी cousin है. Who usually we use for the persons. Okay. Use of which and that. We use that and which when we refer the things, not the people. So which and that we use who for the peoples and which and that we use for the things only. I arranged the books that were scattered on the table. He owns a factory which manufactures cars. So book and factory, both the nouns are things, not the people. So that's why we are using here that and which. Next is omission of who, that, which. Sometimes we can omit who, that or which from a relative clause. कई बार who, that, which हम रिलेटिव क्लोज में यूज नहीं करते हैं, उसको उसमें से निकाल देते हैं. एग्जाम्पल, द कार आई वॉन्टेड टू बाय वॉज टू एक्सपेंसिव. जो कार मैं खरीदना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. यूज ऑफ प्रपोजिशन इन रिलेटिव क्लोज. Read the examples given below and notice the position of these prepositions in these clauses. Example, she found the book that which she was looking for. So here we are using that and which. Why? Because book is a non-living thing. It's a thing. That's why we are using that and which. She found the book she was looking for. So both the sentences are correct and it is not necessary that every time we have to use that or which. Okay, we have to use the relative clause in a sentence. Okay, but
If there is no signs of relative clauses like that, which, who, but still how would you recognize the sentence? See, she found the book she was looking for. उसे वो बुक मिल गई जिसके लिए वो देख रही थी, जिसे वो ढूंढ रही थी. She found the book, उसे वो बुक मिल गई which she was looking for. So both the sentences are correct, but if that and which is not included in the sentence, even it is making sense, and we can we can recognize that we are talking about the single book in both the sentences. Okay. Use of whose. In adjective clause we use whose instead of his, her, their, mostly for people. So whose का use हम peoples के लिए करते हैं. For example, the little girl whose bag was lost complained to the teacher. वो छोटी लड़की जिसका बैग गुम हो गया था उसने टीचर को कंप्लेंट की. दे अपॉइंटेड अ नर्स हुज ट्रेनिंग वॉज क्वाइट गुड. उन्होंने एक ऐसी नर्स अपॉइंट की है जिसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो वी आर यूजिंग whose instead of his, her, their. Okay. Now the next is use of whom. Whom is used in the place of her, him, them. The lady whom we greeted turned out to be a stranger. The boy whom we congratulated is the winner. Okay, next last is where. Use of where. We use where when we refer to a place and we use it in a place of there. So we are using where for the place. Example, I visited a place where Mahatma Gandhi lived for a year. मैंने उस place को विजिट किया जहां महात्मा गांधी एक साल के लिए रहे थे. सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्लेस वेयर महात्मा गांधी लिव्ड. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर वेयर. ओके. सो इट वाज ऑल अबाउट द क्लॉजेस. होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड नाउ फ्यू एक्सरसाइजेस आर गिवन हियर. सी, related to every clause. Now do it yourself. Okay. Thank you. Bye. Have a good day. Take care of yourself.